Okay. Assalamualaikum. So therefore, we have done before the ungrouped data, group data, and discrete distribution table, and how to find the mean, median, mode of those types of data. Now, today we discuss about the cumulative frequency curve. This curve is given in your question, and you need to find the median and the interquartile range from this curve. Now, the question is given to you. You can see the question clearly. 600 candidates took a mathematics examination. Here is a value 600, maximum is given to you. And make sure graph ends at this position. There is sometime graph ends before the value which is given in your table. I'll show you a different question also, which consisted of two papers. There are two papers for the 600 candidates of mathematics. Each paper was marked out of 100. The diagrams show on the same grid the cumulative frequency curve for paper 1 and paper 2. This is for paper 1 and this is for paper 2. What you need to do, in the question, the values are given. Use the cumulative frequency curve for paper 1 to find and estimate the median. You need to find the median for the paper 1. So what you need to do, paper 1 is this value. Now we need to enlarge it. And what are the values given in y-axis? In y-axis, you can see easily the maximum value which is given is 600. And 600 is the value which is given in your question. 600 candidates are there. If you need to find the mid value means the median. So the half of the 600 is 300. So you will find the median at 300. How to find the median? This is paper 1. You are working on paper 1. Half up. You are working on paper 1. So just you need to draw a proper sharp line with a pencil and a scale. That is the curve of paper 1 because we are working for the paper 1. Now use your scale and pencil and you may draw this line. So what is the value here? 40. So the x-axis represent the marks. So 40 marks basically represent the median of the paper 1 of the students. 40 marks you can see. So this line represent the median. Now, is that okay to you? Any problem? Is that okay? Do you understand how to find the median from the cumulative frequency curve? So therefore, do you understand how to find the median from the cumulative frequency curve? Is that okay? Sir, I can understand how to find the median. Okay. Now we move on. What's the next? We need to find the interquartile range. Interquartile range basically we may find by upper quartile subtract from the lower Quartile will quartile. be 50% to 75%. Hmm. How we find the value of upper quartile and lower quartile in this graph? Upper quartile means the upper portion from the median. So you can say the value is 300 and another value is 600. 300 and 600. What is the mid value between 300 and 600? Can you tell me? It must be 450. The mid value Sir, between 1 minute, 1 minute. 300 Sir, wait, and hold on a minute. 450. Sir, Hmm. why are you taking a value between 600 and 300 Because this is 0, this is for the 600 upper quartile range? for the upper quartile, and this is 300. Yes. So upper quartile means the 75%. This is the 50% value for the 75%. It must be in between 300 and 600. So this is 450. And if you need to find the lower quartile,
25%. So 25% must be at 150. Is that okay? And you may understand this if you have this like circle. If you need to find the median, it means you just divide with 2. And if we are saying we need to find the upper lower quartile, it means you are working on 1/4 of the circle. Or if you are working for the upper quartile, you are working for the 3/4. So it's the half for median, 1/4 for the lower quartile, and 3/4 for the upper quartile. So it's 20, 25, 50%. It's 25%. It's 75%. Is that okay? Any problem? Now, No. where is 450? You need to check how many boxes are present between 400 and 500. There are 10 boxes. So each box represents the value 10. You may count it 10, 20, 30, 40, 50. So here we will find the value 450. Now using the ruler and pencil, you may draw it sharply because here you can see easily the curve touches exactly a line. We need to draw this line. Make sure the line just before this line. So you may write it's 50 to 52, 54, 56, 58, 60. So you may write it's 51. For the upper quartile, you may see here, if I enlarge the diagram, you can see the line touches just before the ending of the line. So it's not the exact this point. So for the upper quartile, we have the value 51, not 52. Is that okay? Now, for the lower quartile, we must take in between 0 and 300. So it's 150. So you just take 10, 20, 30, 40, 50. So 150 must be at this position. You may use this, and for 150, draw this line. See again, it's just before the next line. It must be in between the two boxes. This line. Now, it's lower quartile. Here, what is written? It's 22, 24, 26, 28. In between this, it's 27. So 51 minus 27. 51 minus 27. This is the interquartile range. Now 51 minus 27, you may find it. It's 4, 2, 4, 24. Is that okay? Any problem? Yes, it's okay. No 24 problem. marks. Now, focus on the last part. Many students confused in the last part. What is the last part? In the last part, they are saying you need to find the value. You need to find number of candidates who scored more than 45. Who scored more than 45. So make sure on this wording, more than 45 marks. So you need to focus where is 45 marks. 45 marks is at this position. It's 42, 44, 46, in between 45 marks. And here we are talking about paper 1 only. We do not discuss paper 2 here. So for the paper 1, what we need to do, 42, 44, 45. For the 45, we just draw a line. And here we talk about the paper 1.
make sure now. Now, what is the value here? It's 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. It's 370. To make sure 370, 370 are the students who scored 45 marks. 370 are the students who scored 45 marks or below 45 marks. But the question is how to, you need to find the number of candidates who scored more than 45. So total students is 600 and the students who scored 45 marks or less than 45 marks are 370. So you need to subtract it. Why? Because you need to find the value of the number of candidates who scored more than 45 marks. It means you need to find this value. You need to find this value. How many candidates are there? So you will find this value by subtracting the total value 600 with 370. So 600 minus 370. You understand why I subtract these two? So it's simply 0. Is that okay? You must write the students here because they are talking about the students. Do you understand it? Is that clear to you? Yes, sir. Okay. Make sure normally students did mistakes in the third part, these parts of the questions. Otherwise, it will be easy for you to find the median and interquartile range. But make sure you need to use a sharp pencil and a proper transparent ruler. Otherwise, you can see here, if I just touch the line before that, then you will be have a difference of 10 students from 370 to 360. So you must have a transparent ruler and a sharp pencil to exactly draw the lines and see where the line exactly touches the curve and draw the line on the x-axis and on the y-axis. And secondly, you need to know how to read the graph. The graphs have different values and every graph have different conditions, and make sure the graph must be have exact like in question it is given 600 students and graph is also present 600 students and the curve also touches 600 students. There might be possibility 600 students are there, but graph do not touch the 600 students. I'll show you if this present another questions also. So let's see. So in this graph, there are 80 boys and the curve also touches at this position and 80 boys are there and 80 is written here. Sometimes what happens, curve is only at this position. It do not touch at this position. So you need to focus where the graph touches and where the graph ends. So that you need to focus during the subtraction or during the uh, finding the different values from the graphs which will be given or which will be asked in your paper. So we'll do the next and next. Stop. ओके भाई अच्छा एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया तुम्हारा उसके बाद हम अगर बात करें तो
तो मैं अलाइन कर लूँ दूसरा क्वेश्चन, फिर बात करनी। यहाँ तक की बात क्लियर है, तुम्हारे समझ में आ गई तुम? सर आपकी बात सर स्क्रीन शेयर नजर नहीं आ रही है आपकी। हाँ नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं की, मैं क्वेश्चन पहले रेडी कर रहा हूँ। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं है, अभी मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। देखो स्क्रीन शेयर करने के बाद ना स्क्रॉलिंग करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसको पहले स्क्रीन पुट कर लूँ। क्वेश्चन रेडी, कौन कौन से? नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? उदयफा स्क्रीन नजर आ रही है? चलो भाई, तो आपको क्या हुआ? ये उदयफा, हेलो, ये उदयफा, कैन यू सी द स्क्रीन? Okay, now for this, uh, we are doing pie chart. The main topic we are following is the stats, and in the stats we have done how to find the mean, median, mode for the group data, and discrete frequency table. Then we have done cumulative frequency curve, how to find the median interquartile range from the given cumulative frequency curve. Now we are doing pie chart. Here the question is given to you. Jenny asked which type of movie each of the 60 people preferred. The table summarizes her results. Type of movies: action, comedy, drama, horror, and the frequency. Frequency means the number of people. 24 people like to watch action movie. 15 people like to watch comedy. 9 like drama, and 12 people like to watch horror movies. Now you need to represent this data in the pie chart. Our topic is pie chart. How to complete the pie chart? Pie chart basically represent a circle, and we have studied in the circle properties how to find the sector of the circle, or you can say the area of the sector. So for the sector of circle, we have the condition. सर तो अब हम जो है डी के मेजर करेंगे सेक्टर। हम्म, जी, एंगल बेसिकली यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, इट रिप्रेजेंट द एंगल्स इन द फॉर्मूला, यू कैन से। अच्छा। So
Sector means we have the angle. You may say the और independent सर ये value. एक मिनट एक्यूरेट तो नहीं है ना, Hmm? No. एक्शन का 24 लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी। Because we अब don't. इतना बड़ा सेक्टर है एक्शन का, 24 तो नहीं हो सकती ना एंगल। हाँ, यहाँ पर अभी आपके पास जो कंडीशन है हम उसको देखते हैं। 24 एज कम्पेयर टू अदर्स, कैन यू सी 15, 9 एंड 12, ये छोटी वैल्यूज है। तो बेसिकली फॉर द होल सर्कल 24 वाली जो वैल्यू है उसके लिए आप क्या हो, ग्रेटर होते हैं। वी आर नॉट यूजिंग एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला हियर। 24 डज नॉट रिप्रेजेंट द एंगल, basically 24 represent the independent value of that particular sector. That's why I do not write here pi r square, I write here the total value, you can say. And for your confusion, if you may write here the individual value, then it will be okay for you. Okay. Now for the individual, you can say if we work for the comedy, so we have the value 15 over 360 multiplied by the total value. The total number of people are 60 here. We just write 16. We will cancel out 0, 0, 6 on the 6, 6, 6 are 36, 8 to the 6, 3, 5 is the 15, 5 upon 2, it's 2.5. 9, कुछ गड़बड़ हो रही है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। No, you need to find this value. This is unknown. This is the unknown individual sector. We need to find this value. This is 360 and this is 60, and the value for comedy is 15. It is given in the question. So 15 multiplied by 360 divided by 60. Here 0 cancels 0. 6 1 is 6. 6 6 is 36. You need to multiply 15 with 6. Square 6 5 is 30. 0. 6 1 is 6 9. Square 90 degrees. So you just draw a line for this 90 degree, and here this sector represents the comedy. Is that okay? Any problem? The same we'll do for the drama. We need to find the angle basically, and the total angle is 360 and the total value is 60, and the sector for the drama is given to you. It is 9 multiplied by 360 divided by 60 is equal to x. You can just 0 is 0, 6 is the 6, 6 is 36. So 9, 6, 9 is 54. If you have the protractor, it's better to use the protractor. If you don't have, just draw the you can say an average line. So you may draw this. You write here it's in this direction as per the protractor. It's 54 degree. And here you write it's the sector for drama. And obviously the remaining is for the horror. Is that okay? Now we have a few minutes left. Once the meeting will over, we will end the class. Okay. Now, one of the 60 people, one person from the 60 people is chosen at random. We need to find the probability that this person preferred drama or horror. The person might like drama or the person might like horror movie. And for the probability, we have the values. The total value is 60. Here the total value is also 60 for the number of people. For the option, we must do addition. And for the drama, how many people we have?
For the drama, we have 15 and 9 people, and horror 12 people. 9 and 12. I'll explain this in detail with you in the topic probability. Here we're just doing the 1 mark question. So 9 plus 12 is 21. So you need to write the reduced value. So 3 7 the 21, 3 to the 6, 0. 7 over 20 is the answer. Is that okay? Any problem? Now, what they are saying, 2 of the 60 people are chosen at random. Now, there are 2 people chosen from the 60 people. You need to find probability that they both preferred comedy movies. Both person preferred comedy movies. We need to find the probability of both the persons. I'll explain these type of questions related to the probability once we are doing the probability, because you need to understand the probability in detail. Here our focus is on the pie chart. I hope this pie chart is okay with you. How to complete this pie chart? We are using this technique for the finding a particular sector, which we did in mensuration. We are using the formula here. You may say, to find the angle of that particular sector, and the values are given. Individual value means the individual sector, the particular sector, the part of the sector circle which you need to find, and the value of that particular sector is already given to you. We just use the concept of that formula here. We are not using exactly the values or the other things here. Is that Sir, okay? sir, scroll down. अच्छा, ये तो असल में टाइम तुम्हारा आउट होने वाला है। रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, ओके। हाँ बोलो। सर स्क्रीन शेयर में डाल देख रहा था मैं। हाँ नहीं, वो ये टाइम आउट होने वाला है ना, इसलिए मैंने हटा दी। इसमें बस ये कह रहा था कि नीचे जो सवाल आ रहे हो प्रोबेबिलिटी के हैं। सर तो स्क्रीन लगाएं दोबारा, मैं स्क्रीनशॉट तो ले लूं उसका। अच्छा, वेट वेट वेट, क्योंकि फिर वो ऑफ हो जाएगा ना, तो बस मैं हम क्लास एंड कर दूंगा। 1 मिनट। थोड़ा ऊपर करें। एक बस ठीक है, मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ये बस हो गया स्क्रीनशॉट। सही है। अच्छा, इसमें स्टैट्स में आई थिंक सो कि सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आपके पास क्या कहते हैं। अच्छा, अब कल की क्लास में क्या होगा? मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, ये वाली फाइल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस फाइल को आप देखें। कल की क्लास में हम इनइक्वालिटीज के ग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज के जो ठीक ग्राफ है। है ना, वो भी आपको दूसरा, ऐसे ही आपका होमवर्क मैंने पूरा करना है जो आपने दिया हुआ था। हाँ, और होमवर्क आपका सारा, आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है। सैटरडे वाले दिन सिर्फ मुझे आपका होमवर्क चेक करना है, ये बात याद रखना। बहुत सारा आपने कहा था होमवर्क है। जितने हमने टॉपिक करे हैं पेपर 2 के सारे, उसके ऑल्टरनेटिव सवाल करने हैं जो टॉपिक हम कर चुके हैं। हाँ, और यहाँ पर मैं और तुम्हें पेपर 1 से स्टैटिस्टिक्स करनी है, इंडाइसिस करना है, जो काम गलत हुआ है और रीडू करना है। हाँ, तो मेक श्योर। और ये स्टैट्स की फाइल मैं तुमसे सर शेयर कर रहा क्लास की हूँ। टाइमिंग 11:30 बजे कर दें, बात मान लें मेरी। 11:30 बजे कर दें टाइमिंग क्लास। मैं पता है, अभी मैं घर में हूँ। मैं जो असल 15 मिनट में कुछ भी नहीं हो रहा, और मैं अभी घर में हूँ। और उसमें मेन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी क्लास जो है ना, वो 1 घंटे से ज़्यादा की है। सही है। तो 11:30 जैसे अगर मैं उसको 11:15 में आपको बोलूँगा ना, तो क्लास अलाइन करके स्टार्ट करने करने में 20-25 हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ 12:30, 12:35, 12:40 तक क्लास ले जाऊँ। बस, और कोई मकसद नहीं है। देख लेते हैं, इसको 11:30 कर लो, वो मसला नहीं है। घर पर होगी तो मैं आके बैठ जाऊंगा उसको, या यहाँ होगी। लेकिन 15-20 मिनट की सेटिंग से अपने आप को सेट कर लो। सही है। अभी भी देखो, तुम तकरीबन शायद 11:35 या 40 पर तुमने मैसेज किया ग्यारह है। इकतालीस पे हाँ, तो मैं रेडी हूँ। तो देखो तुम कितना, तुम आधे घंटे ऊपर चलेगा। सर तो मैं रेडी चल, था, मैंने मैसेज नहीं किया आपको, मैंने शायद लिंक भेजेंगे, ज्वाइन कर लूंगा। तो मैंने तो तुमसे लिंक पहले ही शेयर किया हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, लिंक तो ऊपर शेयर था मैसेज से पहले। तुम देखो, ये दूसरा लिंक शेयर किया मैंने है गौर मैंने। नहीं किया। मैं उठाऊँ 11:20 पे? अच्छा,
फौरन मैसेज कर दिया करो ना, ओके रेडी क्वेश्चन और मार्क ठीक है, डॉट मैं कुछ भी। रेडी का मैसेज कर दूंगा, ऐसा उठा करूंगा ना, रेडी का मैसेज कर दूंगा आप। हाँ बस ताकि पता चल जाए। तो कल इंशाल्लाह 11:15 पे क्लास करते हैं। और आपका मैं और भी थोड़ा सैटरडे का अलाइन सारा काम करूँगा। देना है आपको। हाँ और स्टैट्स का मैं फाइल बल्कि भेज दूँ तुम्हें अभी हाथ पे हाथ, तो ये रह जाती है। तो ये वाली जो फाइल सर है। एक बात बताएं, हम्म, स्टैट्स पेपर 1 में अलग आता है, पेपर 2 में अलग आता है? पेपर 1 में और पेपर 2 में सेम जितने भी टॉपिक्स हैं ना यही डिस्कस हो रहे होंगे। क्वेश्चन लेकिन सेम आते हैं? क्वेश्चन में ये डिफरेंस ये आता है कि देखो ऑब्वियसली आपके पास वो क्वेश्चंस जो आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कहा कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया। सही है। अब पेपर 1 में भी आपके पास स्ट्रक्चर्ड सवाल आएंगे। सही है। और आपके पास पेपर सिर्फ एक आती है। अब जैसे हम पेपर देख कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वो निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो मुझे बताओ अगर पेपर 1 में आ जाए तो क्या मसला होगा? बोलो। जी। अगर ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वाला सवाल था, ये पेपर 1 में अगर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, देखना। अगर वर्किंग आसान है तो हो जाएगा, वर्किंग मुश्किल है तो नहीं होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसमें सीधी सीधी आपको लाइनें ड्रॉ करके वैल्यू तो निकालनी है, तो पेपर 1 में भी आ सकता है। तो आपके पास, जो मैंने आपसे कहा ना, आपके पास जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें सिर्फ एक या दो पेपर आपको मिलेंगे नए पैटर्न के हवाले से। बाकी सारे पुराने पेपर 1 और पेपर 2 मिलेंगे। अभी जो नया आपके पास सर है आपने वो, वर्कशीट भेजी है? हाँ वर्कशीट ये हो गई ना कंप्लीट। अब इसमें जो भी रैंडम दूसरे सवाल है वो खुद से अटेम्प्ट करो, जो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे मुझसे वहां पूछ लेना। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऐसे असल में तुम ग्रेड 11 के अपियरिंग स्टूडेंट हो, 1-2 महीने बाद पेपर हैं, एक एक सवाल को लेके बैठे रहेंगे तो बहुत मसला होगा। आपको खुद से पूरे शीट से सवाल भरे हुए हैं, जो तुम्हें नहीं आ रहा वो तुम नोट कर लेना, मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। सही है। क्लियर है। मीटिंग खत्म हो गई। हेलो। हाँ क्लियर है, बस हो गया। क्लियर है। सही है। तो बस आज इतना रख दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।